Going live देखुची going live हे Beginning. Good morning, guys. Welcome to OKCL Achievers series. As you know, today we are going to devote one class, English. And in this English session, we are going to discuss first chapter in grammar, that is article. because of internet connectivity issue, we are not connected yet. Now connected. Okay, then. Now connected, we are all. And our first, so welcome to Achievers series. And today our first chapter is going to be devoted to our new chapter, that is first chapter, that is article. The first chapter is articles, and most easy chapter and most fundamental chapter you must have known. At your 9th and 10th standard, you must have been taught this chapter very well. And I anticipate you would have forgot some of the important points. So let us discuss in this class all the important points that are to be expected in our examinations. How questions are coming, all the 5 aspects of this chapter, like articles, what are the different types of articles, and use of indefinite article with examples, and uses of definite article with examples, and where articles are not preferred at all, and where articles are omitted, and how questions are expected in our ASO and all SSC and Bank PO. So we shall discuss in detail all those things. After that, if you have any doubt, you can feel free to revert to me. First of all, articles. First of all, articles. What are the different types? We shall discuss. These are the determiners which determine nouns whether they are general or specific. At a broader sense, article is called as a determiner in our English literature because that determines a particular or a specific thing or a person. Hence, it is called as a determiner as it is in mathematics. Let us discuss in detail. There are two types of articles. One is indefinite, another is a definite article. Indefinite articles are a and n, as you have known well, very well, in at your fundamentals. And next is the definite article. We shall discuss in detail with multiple examples. Only you should remember only where these articles are used with slight logic and reasoning, so that you can answer all the questions succeedingly. First, let us discuss indefinite article. Indefinite article, these a and n, these two are called as indefinite article. There is no definite that when it refers to something in generality, it is called a and n. These two articles are used. Indefinite articles are used to refer to something general or non-specific. Example, the hunter caught a bird in the forest. Can you tell me which particular bird the hunter has caught? No specific information about the bird. A bird in general.
This the hunter caught a bird in the forest means the hunter caught any bird in the forest. There is no specific color or specific name or specific anything. Just bird in toto, bird in general. Entire it refers to the entire bird class, society, clan. Okay. So when there is no specific reference, the article A is used over here. Had it been no, the hunter caught a the the hunter caught the red and blue bird, then the question would have been different. Here you see, instead of article, only to get you confused, sometimes the question will come like this: the hunter caught a bird in the forest, it is general. The hunter caught the red and blue bird, it means a particular bird that contains both color red and blue, which may be the only one in the forest. That is why when there is no specific reference to any color or creed or caste or color, clan or sex, anything, the reference would be in general and the article will take A and N. Before I take you further into it, as in my next succeeding slides, you will find to know that where article N is used. Before I take you, I would like to tell you that where N is used, you will come to know, because we shall move step by step as per the slide. If the first letter of the countable singular common noun is a consonant, A is used before it. Obviously, Mohan has bought a new car and I have caught a fish. This F letter and here N letter, both are consonants. As you must have known, there are how many consonants are there and how many vowels are there? There are 5 vowels. You must have known 5 vowels and 21 consonants. These two, these 5 vowel units letter produce 20 varieties of sounds. These produce 20 varieties of sounds, and later you will come to know whenever you will be taught pronunciation class in. Okay, I shall continue. Okay, let's come back to our chapter where we had left. Now, where indefinite article A and N are used, let us discuss. पेन আসলে না এটা লাগে ওহ এটা আছে
Okay, Prabhat creation. Sir, please speak in Odia. Okay, okay, definitely I would be speaking in Odia. ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝେଇବି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। A and N ଆମେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସେଇ ୱାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ, ଆପଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଟରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ୱାର୍ଡ ଯଦି ଆସେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରେଫରେନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଆସେ, ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଟରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ ଏନ୍ ବସାଉ। Article N is used before A, E, I, O, U words. For example, we shall discuss in detail in our succeeding slides, as this is the first definite article. A is going on over here, and we are discussing over here. So as I taught you in just 5 minutes back, I taught you Mohan has bought a new car. I have caught a fish. Here both A is placed before two consonant words. One is fish, another is new. Here N is a consonant and here F is a consonant. ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି F ଅଛି ଏଠି N ଅଛି, ଇଏ 21ଟା ଆପଣଙ୍କର 21 consonants and 05 vowels. ଆମେ A N D यूज କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ students, remember that whether that word first begins with consonant or vowel. Accordingly, our logic we shall apply then. So if the first letter of a countable singular noun common is as, Mohan has bought a new car. Any new, there is no specific reference to a particular car. A new car, lakhs and crores of new cars are there, among them one new car. But there is no specific identity mentioned over here. कौन specific identity एठी नहीं, तेणु article A एठी बसिचे. सेमिति, I have caught a fish. Which particular fish? कोउ fish, तार details, पानी माछ कि लुणी माछ सब किछि, anything is obviously over, not mentioned over here as fish in general. So specific indefinite article A is used over here before 21 consonant sounds. N is a consonant sound, F is a consonant sound. Then we shall move to next chapter. Next slide. A is also used before countable common noun, whether the noun denotes a complete class of things, persons, or animal. This is another example interesting. It is called a dog has 4 legs. Every dog has 4 legs. When I refer a dog has 4 legs, this a dog refers to the entire class, entire community, and all the persons. Hence, a dog has 4 legs means every dog has almost, every 99.99% dogs have 4 legs only. So, complete class of things. ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଠିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାରି ପାରନ୍ତି. In the above sentence, A has been used before a dog because we are talking about a complete class of dogs. Like that, we shall move to next. A is used before a profession, rank, title, religion, nationality, etc. A teacher, a Japanese, a Hindu. Here, entire class it referred, teacher, entire clan, entire clan
nationality it refer, and here religion or mazhab or a particular clan, society it refers. A teacher, a Japanese, a Hindu, a Muslim, a Christian, like that it will go on. A is used. Next, A is used before singular countable nouns and after what in exclamatory sentences. Like, what a beautiful painting. What a liar he is. Here, A is used. Obviously, this L is a consonant and B is a consonant. These two indefinite article A is used to refer to exclamatory and something when you get surprised or something when you become emotional to express. At that time, this indefinite article A is used. What a beautiful painting! What a liar he is! ସେ ଏଟା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଏଇଟା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଏ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆଉ ଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯୋଉଠି ଭାୱେଲ୍ସ ଆସେ ସେଠି ଏନ୍ ଯୋଉଠି କେବଳ କନସୋନାଣ୍ଟସ୍ ଆସେ ସେଠି ଏ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର A is used when we talk about collective nouns, like a team. A team is a collective. It is a group of sports. It is a group of players, a group of persons. So team, like that flock, like that bunch. When it refers to group, bunch, or something collective, at that time article A is used. Clear? Just I am referring next example. A is used to express the rate. 20 rupees a kilo means per kilo. Yeah, a kilo means per kilo. Clear? Per kilo because A is used to express the rate. 20 rupees a kilo. 50 words a minute. Sir, he is typing 50 words per minute. Means 50 words a minute. Note, we can also use per in place of a in the above. Here it is referred also, per. Next, example 20 rupees per kilo or 50 rupees per kilo, okay? Next, we use a before an adjective when the adjective is followed by a singular noun. Gaurav is a good musician. A good musician, good is an adjective. So before the adjective, A is used. He is a hard-working man. Hard-working is an adjective and article A is used because it refers to a singular noun and it refers to quality of a man. It, it, it refers to quality. As it refers to quality of a man, hence it is called as adjective. Next, in the first letter of a countable singular noun is a vowel n is used before it. Now we shall discuss in detail using indefinite article n, where n is used. As I told you, before all before all a, e, I, o, u. If any word begins with a, e, I, o, u, obviously the article will be n. A few exceptions are there. We shall discuss step by step. First, we shall discuss how article n is used before these a, e, I, o, u words. First, number one, a, e, I, o, u स्वरवर्ण vowels जो वर्ड द्वारा आरंभ होता है जो वर्ड रो आरंभ रे थाए ए, ई, आई, ओ, यू लेटर और vowel unit सेई वर्ड पूर्वरु आमे आर्टिकल n बसाऊ. The brother of my friend is an astronaut. Astronaut is a singular noun and this word begins with a letter A. You must be looking at this board. आपने देखि पड़ुथिबे this N is used before astronaut. I wanted to eat an orange. Here also an orange. Okay. So when refers to anything in general, no specific, but the word begins with a, I, o, u, then the conditional will be
Okay. So next we shall move to next chapter, that is next we use N before some abbreviations which start with H, L, M, N, F, R, S, X, etc. because they produce vowel sound. My friend is an MLA. When we utter MLA, when member of legislative assembly, when we tell M बोलने से पहले we generally suppose when I am telling M, I use the sound A first. As I told you, A, E, I, O, U, these are 5 vowel letter. These 5 vowel letter produce 20 varieties of vowel sound units. These 20 vowel sound unit they produce. Let us say example MLA, RDC. Suppose I want to tell RDC. Before I utter the word R, first I utter the sound A. RDC means first I produce the sound A, then R sound comes. We shall discuss in detail after that. Next, indefinite article A, N are used on the basis of the initial sound of a noun, not on the first letter of the same, because usage of N depends on the initial sound of the noun and not on its spelling. Example, for example, an honest. Here, of course, there is a consonant letter H is there, but still then why we use N? Though there is H, of course, there is H, but in English literature, there are some letter, there are some alphabet, though they look like consonant, but they produce the sound of vowels. When we tell it's not honest, it's honest. So when we utter honest, all sounds comes out. That is why article N is used. We never produce, as it is written H, we never produce ho or honest. Clear? Like that, an hour ago. We never tell hour ago. We never tell hour. We always utter ghanta, hour, hour, an hour ago. But we never tell an hour ago. So, though there is a consonant letter H, but we produce the sound of R. Similarly, we write a union, not an union, and an European. These are the two exceptions to it. When we write union, European, then a article is used because there is no vowel sounds comes through U and A. Hence, it is an exception to it. Next, indefinite articles are not used with a plural noun. For example, buses are parked near the mall. You cannot tell, it is an incorrect sentence. A buses cannot be because buses is a plural noun. Bus is a singular noun, gotiye bus. Bus gudiko means buses. So before buses, we cannot use article A. Buses are parked near the mall. Direct buses are parked near the mall. It is a correct sentence. No article is used. No article. Article here is superfluous, is unnecessary. ये अदरिकारे यहाँ एठी यूज हेबो नाही. Clear? Next, indefinite articles are not used before the names of meals, sports, subjects, language, etc. These four particular words you should remember. These are important. Before meals, sports, subjects, and language, generally articles are not used. For example, in correct sentence, Paul was absent from a dinner.
Paul was absent from a dinner. अच्छा हो ठीक अच्छे indefinite article अनिर्दिष्ट ये meals sports subjects or language एमानक पूर्वरु बसा जाए ना फॉर एग्जांपल देखंतु एठी Paul was absent from a dinner एठी लेखा हला from a dinner dinner पूर्वरु ए दिया गला मींस हम जदि ओडिया रे देखिबा Paul absent थिला गोटिए डिनर रो Paul absent थिला डिनर रो गोटिए डिनर कोन डिनर तो सबले गोटिए ही होय so here a is superfluous over here because dinner एक meals को रेफर करछे here dinner next they were playing a tennis खेलुतले a tennis खेलुतले a cricket खेलुतले कोआ जाय नै स्पोर्ट्स खेलुतले टेनिस खेलुतले फुटबॉल खेलुतले तो एई खेल स्पोर्ट्स किछि पाठ्यक्रम सब्जेक्ट्स आ भाषा आ खाद्य मील्स एमानको पूर्वरु केबे भी इंडेफिनिट आर्टिकल बसा जाय नै आपण डेफिनेट आर्टिकल बसाई परिबे जुटी स्पेसिफिक दबा को चाहउछन सो स्पोर्ट्स पाखरे बसा जाय नै नेक्स्ट टीचिंग द टीचर इज टीचिंग हिंदी दैट्स ऑल हिंदी लैंग्वेज पढौची एठी आसी जाउची रेफरेंस रे हिंदी मीन्स हिंदी लैंग्वेज द टीचर इज टीचिंग ए हिंदी और दी हिंदी और एन हिंदी ए सब इनकरेक्ट जेहेतु एटा लैंग्वेज को बुझाउची क्लियर आमे नेक्स्ट चैप्टर को जिबा indefinite articles are not used before material nouns जो noun materials को बुझाए धातु पदार्थ he hit me with an iron incorrect he hit me with iron that's all means iron रो किछि लुहार किछि स्टिक किछि बाडी किछि इंस्ट्रूमेंट द्वारा से ताको से मते हिट कला एठी स्पेसिफिक नाइ you can he hit me with that black iron rod with the iron rod here when it refers to a particular thing specific then you can use the but when you refers to something in generality then there should not be any article rather no article will be used because यहाँ general mass material noun को बुझाउची he hit me with iron similarly that is made of silver that is not made of a silver here is also an incorrect expression next definite article we shall discuss so we got overall idea ame paile overall idea कोठी कोठी आमे आर्टिकल ए यूज करछु आ कोठी कोठी आर्टिकल एन यूज करछु ए दुई जण जाको इंडेफिनाइट आर्टिकल कोआ जाय बर्तमान डेफिनाइट आर्टिकल आमे देखिबा डेफिनाइट आर्टिकल मींस particular reference particular target pinpointing targeted reference a definite article the रो दुईटी उच्चारण गोटे होचे द आ गोटे होचे दी जोठी आसे अल्फाबेट ए ई आई ओ यू सेठी हमें दी उच्चारण करो जोठी कॉन्सोनेंट आसे सेठी हमें द उच्चारण करो सो टी एच ई दी वर्ड टी एच ई दी रो दुईटी साउंड थाए द आउ दी दुईटी जाक अमेरिकन डिक्शनरी आ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रे लिखाई छे साउंड आ आपण माने भी स्पोकन इंग्लिश रे सुनुथिबे के द उच्चारण करे के दी उच्चारण करे शास्त्र कहूची एठी पाठ कहूची इंग्लिश लिटरेचर जो वर्ड अल्फाबेट vowel alphabet a e i o u रे स्टार्ट होता है सेगुडा को जनरली वर्ड दी एप्पल इट द एप्पल हुए नहीं दी ऑरेंज हुए नहीं बट यू कैन टेल द पेन बिकॉज कॉन्सोनेंट इज पी एबे वर्तमान आमे भीतर को जिबा आमे डिटेल्स देखिबा कोठी कोठी आर्टिकल दी हमर यूज होचे First, definite article D is used when the noun with which it is used is a particular one. जोठी particular गोटिए को reference आसे, it may also be used for a noun that has already been mentioned or is unique
explicitly specified. Let us discuss. Example, this is the girl. ଏଇ ସେଇ ଝିଅ, ଏଇ ହିଁ ସେଇ ଝିଅ। ଏଇ ଯୋଉ the girl ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। This is the girl. The is referred over here and it refers to a particular girl. This is the girl ଏଇ ସେଇ ଝିଅଟି ଯିଏ କି who played chess. ଏଠି who refers to that particular the. Clear? In the above sentences, the girl has been specified to be the one who played chess. ଆଉ କେହି ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଜଣିଏ ହିଁ ଖେଳିଲା, ଯିଏ କି ଚେସ୍ ଖେଳିଲା ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଝିଅ। Clear? Next, definite article the is used. Unlike indefinite article, the definite article can be placed before both singular and plural nouns. She called the doctor yesterday. But one of the doctors is absent today. ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବସାଇ ପାରିବା ଦି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଫରେନ୍ସକୁ ଦଉଛେ ଗ୍ରୁପରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସି କଲ୍ଡ ଦି ଡକ୍ଟର yesterday, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡକ୍ଟରକୁ କଲ୍ କରାହେଲା। ଏଠି ବି ଆନ୍ସର ହେଇପାରେ ସି କଲ୍ଡ ଏ ଡକ୍ଟର yesterday is also right. Here she called a doctor yesterday, a general doctor where there is no specific reference. She called the doctor yesterday, here it refers to a particular doctor. One of the doctors is absent today, means out of many doctors, one particular doctor is absent. Hence, particular the is used. Clear? Next, definite article the is used before the names of rivers, sea, gulfs, deserts, directions, canals, planets, name of title and posts, building and monuments, religious books, holy scriptures, etc. Nothing is left, all are mentioned over here. आपण माने आपण मानकर लॉजिक, आपण मानकर मैच्योरिटी ऑफ ब्रेन रे आपण माने जानि परिबे ए वर्ड गुडा को मन रखंतु। इंग्लिश इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट slightly somewhat problematic to remember number of points, but here as you are all matured students, you have already come through 9th, 10th and plus 2, so it is very easy on part of you to remember all the important points. All the Mahanadi, the Rusikulya, the Godavari, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Prashant Mahasagar, everywhere where it refers to particular river, sea, gulf, name of all title, here article the is used. The Mahabharata, the Veda, the Gita, the Taj Mahal, the Iron Man, the sun, where it refers to a particular sun, one sun, the sun. Because here in this solar system only one sun is there. Next, definite article the is used before a noun if it is followed by a relative pronoun. She is the girl who dances well. He is the man who plays tennis well. This is the dog which faced an accident. Where all these three the is referred to a particular man, girl and dog. Here the reference is particular. Hence, definite article the एठी व्यवहार हेची। काहेकि ना तापर जो रिलेटिव प्रोनाउन आछी हु, तापर जो रिलेटिव प्रोनाउन आकु से रेफर करूचे। आपण माने प्रोनाउन कोन आमे पर क्लास रे डिटेल्स बुझिबा। The is used before an adjective if that adjective is followed by proper noun. We met the great Sachin Tendulkar in a function in Mumbai. The great Sachin Tendulkar, because the is used before article, that article is followed by a proper noun. Because Sachin Tendulkar is a proper noun referred to Master Blaster, the great Sachin Tendulkar. I have read many books of the great Khalil Gibran, the great Chandragupta Maurya, the great Akbar, the great Shahjahan. ऐसे बोलते हैं ना. We met the great, all the where
a particular person or thing carries a specific adjective proper noun. In that case, the is used. Next, the is used whenever two proper nouns are compared. Prabhudeva is the Michael Jackson of India. Kalidas is the Shakespeare of India. Means one person is compared with another celebrity or another magnate person, then the is used over there. Prabhudeva is the Michael Jackson, otherwise the cannot be used before any noun, any proper noun or any common noun. Okay? Colonel is the Paris of Haryana. In case of only comparison, only the is used. Next, the is used only once when the two nouns refer to the same person or thing. The secretary and advisor of the organization was invited to the function. A point is most important point. Most important. ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା आर्टिकल केमिति यूज होचे आ ताकू धरि के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केमिति भी यूज हुए। The secretary and advisor, there are two singular noun connected by and. दुईटी सिंगुलर नाउन गोटे होची सेक्रेटरी आ गोटे हला एडवाइजर। दुईटी सिंगुलर कॉमन नाउन गोटे दुई लागि दी लागि ता पूर्वरु जे सेक्रेटरी से ही एडवाइजर। सेक्रेटरी आ एडवाइजर गोटे लोक जोठी गोटे लोक दुईटी पोस्ट दुईटी टाइटल रखे सेही केस रे आमे गोटे ही डेफिनेट आर्टिकल दी यूज करू वाक्यर आरंभ रे। जेमिति के एठी दी सेक्रेटरी एंड दी एडवाइजर हबनी। दी सेक्रेटरी एंड एडवाइजर मीन्स वन पर्सन कैरिंग टू डेजिग्नेशंस। दी सेक्रेटरी एंड एडवाइजर जेहेतु ये गोटे लोक तेणु एठी वर्ब आमर हैला सिंगुलर। was एठी were हेलानी कहीं गोटे लोक was invited। the sentence is in voice tense passive voice रे अछि। Next, the manager and controller of the institution was requested to attend। एठी भी सेमिति एग्जांपल the manager and controller गोटे लोक and द्वारा कनेक्टेड। एठी जदि थांता the manager and the controller तेबे हमर वर्ब होई थांता were। एठी were होई थांता। Sir, the manager and the controller of the institution were requested to attend the meeting. It means here the reference is to two persons. Manager is a separate person, controller is a separate person. Next, the is used twice when the two nouns refer to different persons or things. Example, the secretary and the advisor of the organization were invited to the function, as I taught just before this slide. एठी दुई दी is separately used, hence there are two separate persons, hence the verb became plural। here verb become plural because there are two different persons, the secretary and the advisor। next, like that, the manager and the controller, here also the example is same, there are two different persons carrying two different designations, hence verb became were। Next, the is omitted before material noun. It is most important again another. The copper is a very useful animal. Gold is very costly, precious animal. The gold is never, because it refers to the entire group, entire system, entire material, that is gold, copper unit, entire material unit. Next, hence hence the is not preferred over here. The is incorrect because copper means entire copper unit. Entire copper, it refers to the copper material as a whole. So the copper, a copper, n copper, here at specific any article will be superfluous over here. Next, the is omitted before abstract noun when it is used in general sense. Example, the punctuality is the soul of business. Punctuality is the soul of business। the punctuality is not necessary to write down because punctuality is punctuality। abstract noun जो गुड़ाक refers to qualitative things।
Next, some more places where we omit article a and the. Example आउ किछि देखि परिबा before proper noun Delhi Shakespeare ना पूर्व as I told you the India कभी होगा नहीं the Delhi कभी होगा नहीं the India hockey team you can tell. Before languages Chinese, Russian, Indian. Before hobbies and professions gardening, dancing, writing, painting, all the professionals no article is used. Before regular meals, lunch, dinner, before parts of the body, liver, eyes, ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବସାଯାଏନି କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ଏ ଏନ୍ ଦି ବିକଜ ରେଫରେନ୍ସ ଇଜ ଜେନେରାଲ এই ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ଆର୍ଟିକଲର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିନେବା My friend always likes, correct the error, my friend always likes to travel by the air since he is a very businessman, very busy man. So, here, where is the mistake? You can easily find out. My friend always likes to travel by air, where here the is superfluous over here. The air means what? The Indian air or the Pakistan air? It comes to lot of confusion. That is why my friend always likes to travel by air, means by flight. Like that, we shall discuss all the questions step by step. Next, Mr. Sinha was a more famous philosopher than a politician. Here, the mistake is Mr. Sinha was a more famous philosopher than politician. Than a politician, here it is unnecessary because here comparison is more famous because it is an as as we learnt because before any famous proper noun we can use a. He is a good adjective, he is a good musician, a famous philosopher, like that. So we have to drop the a before politicians. Clear? Next, another example. The manager and the executive director of the company is a very energetic person. As I taught you, the manager and the executive. Obviously, there are two persons, two singular persons connected by and. Hence, they become both these, so subjects become plural because there are two subjects. One is manager, another is executive director. The executive director and the manager, there are two different persons. The sentence begins with the two separate subjects, hence verb should be plural. The verb instead of is, we should write are. Either we can correct this sentence here by giving are, or we can correct this sentence by dropping the over here. We can compare the D over here. एठी D को आमे over करि परिबा. एठी we can erase the. Clear? So, like that. We shall move to next. Do you take a sugar? And if so, how much? Do you take sugar? A sugar, what is it? It sounds also awkward. Abhagya Subhuchi. Because literature sometimes goes by audibility, Shruti Madhurata. So, here also you can feel awkward when I tell go over here. Next, the district magistrate possesses both the civil and criminal jurisdiction. The district magistrate, here subject is particular, collector, the DM, one person, clear? Hence the verb is possesses. How to find out mistakes? We have to first word by word, first when we are checking, when we are trying to find out error, we shall move by checking every word from the beginning. The district magistrate means here there is nothing wrong. District magistrate is referred as a particular one. District magistrate, hence the verb become singular possesses. Verb में s लगा है. The district magistrate possesses both the civil and criminal jurisdiction. Here, the magistrate, there are two
jurisdiction. One is criminal, another is civil. Hence, so the article should be used both before both the noun. For example, both the civil and the criminal we have to write. Otherwise, the sentence will be mistake. Will be a mistakes, incorrect sentence. Fill in the blanks with the correct article. Mumbai is the largest city of Maharashtra. Mumbai, because before all superlative, one point is not mentioned over here. Before all the superlative, large, larger, largest. Before all the superlative degree, the best. We use the. Clear? Next. Are you attending dash reception that you were invited yesterday? Here, ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ସାର୍ ଏଠି ରିସେପସନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଏନ୍ ଡି କୋଉଟା ଆର୍ଟିକଲ ରାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ରିସେପସନ୍ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଭେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭେନ୍ୟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତ ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଆପଣ ଏଷ୍ଟରଡେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ ଦେଇ ବସିବ ବଡ଼ ସିମ୍ପଲ Are you attending the reception that you were invited yesterday? Means here someone is asking you are going to that particular reception for which you have been invited. Clear? So answer is the. Next, dash oranges are grown in Nagpur. Oranges are grown in Nagpur. The oranges are grown in Nagpur. Article D, no article is used over here. Oranges are grown in Nagpur is itself a correct sentence. Orange Nagpur re hue. Now oranges are also grown in several parts of the world on this planet. Oranges are also grown in Nagpur. This no article is used. But if you want to give any particular reference, sir, I took the orange that are grown in Nagpur. Yesterday I took 3 oranges that are grown in Nagpur. Here, article D is used because when it refers to particular oranges of Nagpur. Next, she is dash honest IPS officer. She is an honest IPS officer. Here, article N is used because there are many IPS officers, honest IPS officer. So, ସେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଗୋଟିଏ IPS honest IPS officer ସେଠି ଆମେ N ବସାଇବା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ H ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କାହିଁ ହେଲା ନା ବିକଜ ଯଦିଓ ଏଠି କନସୋନେଣ୍ଟ H ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାୱେଲ ର ସାଉଣ୍ଡ ଦଉଛି a clear so like that we shall be discussing all the questions one after one and I hope you must be going through all the questions and in our coming class we shall discuss in detail all the answers of the questions ଥାଇପାରେ Acha. Next question. Okay, we shall discuss. Next question. Dash lion is a ferocious animal. Answer is the. No article is used. No article is used. Lion is a ferocious animal. Itself is enough when we refer to because it refers to the entire clan of the lion. Next. Sir. Okay. So this is all over about article as we discussed. I hope you must have understood well and if any doubt evaporates, if any doubt creeps in, then you can feel free to ask me to revert to me through our medias and other channels. Thank you, sir. So, I request all of you to purchase that OKCL Learning Companion app from the Google Play Store and to get more questions and answer. हम मैंने से आप माध्यम रे बहुत क्विजेस देइछु टेस्ट सीरीज देइछु बहुत पीडीएफ मटेरियल मध्य अछि तेणु ताकू आपण ओकेसेल लर्निंग आप माध्यम रे बहुत प्रैक्टिस करबा चेष्टा करंतु सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड जहाँ भी किसी आपण डाउट अच्छी लाइव चैट रे आपण माने लिखंतु जहाँ द्वारा फैकल्टी माने ताकू आपण को आंसर दे परिवे सो थैंक यू ऑल
Okay, good morning everybody. So welcome करछु समस्त को OKCL Achievers series रो मो ना अमय कुमार विश्व मो आपनकर इकोनॉमिक्स पार्ट पढौछि देन आज हम ASO Achievers series रे ASO पोर्शंस रो किछ पोर्शंस हम देखिबा तो प्रथम आपण जानथिबे कि ASO रो सिलेबस रे आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस होछि कि इंडियन इकोनॉमी रो किछ पोर्शंस आसीबो इंडियन इकोनॉमी रो किछ पार्ट आसे इंडियन इकोनॉमी रे ओके इंडियन इकोनॉमी रे तो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची आपनकर ग्रोथ डेवलपमेंट तापर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट देन पॉवर्टी इज द बेसिक पोर्शंस तो आज आम डील करिबा पोर्शंस आपनकर जेमति कि रहिछि आपनकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ तो बेसिक जीवा पूर्व हाउ मेनी ऑफ यू अक्वाइंटेड विथ इकोनॉमिक्स सो मु किछि फंडामेंटल्स आपन पई कि भी रखि जे आपन कि सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड तो आम कोन कोन आज रो चैप्टर देखिबा ओके सो मु रखि जे आपन पई किछि फंडामेंटल्स रखि छी किछि फंडामेंटल्स रहि छी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखिबा इंडियन इकोनॉमी रो डिफरेंट सेक्टर्स देखिबा नेशनल इनकम देखिबा और नेशनल इनकम की मेजरमेंट होची और प्लानिंग कमीशन दिस पार्ट इज वेरी इंपोर्टेंट लास्ट दुईटी एएसओ एग्जाम रे इथु बहुत गुडे क्वेश्चंस आछि आज वेल आज किछि नेशनल इनकम रो भी बहुत सारा क्वेश्चन आछि जदि आपन पाखर किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थिबो देन डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस आल्सो ठीक अछि सो लेट्स स्टार्ट so before I go to the part आमे किछि बेसिक्स फंडामेंटल आरंभ करे व्हाट इज इकोनॉमिक्स so as you know that कि इकोनॉमिक्स कौन कहे ना आमर सोसाइटी रे थिबा स्कैर रिसोर्सेस और रिसोर्सेस अर्थ होची कि आपनकर संसाधन विभिन्न प्रकार आमर संसाधन रो आमे कौन करिबा ना वैल्यूएबल यूज करि परिबा एवं से यूज्ड रिसोर्सेस को आमे यूज करि करी आमे ताकू सोसाइटी को गोटे प्रोडक्टिव डेवलपमेंट रे आमे बांधी परिबा दैट्स कॉल्ड आपनकर इकोनॉमिक्स so what means economics is the study how the society uses scarce resources to provide valuable commodities and distribute them among the different people तो society रे different section of people अछंती समस्तଙ୍କ ପାଇଁ कि समान भाबरे जो resources को हमें समान भाबरे बांटीबा को that become the part of the economics जदि इकोनॉमिक्स को हमें देखु जे तले इकोनॉमिक्स रे डिफरेंट ब्रांचेस रही सो बेसिक ब्रांचेस आपनकर डील करे बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आम पई बहुत वाइटल कारण जतबेले हमें इंडियन इकोनॉमिक्स रे कथा कहउचे ताहले हमें कोनोसी कंट्री रे इकोनॉमिक स्टडी करबाटा पोर्शन को आपनकर मैक्रो इकोनॉमिक रे जाए एवं माइक्रो इकोनॉमी रे बेसिकली कोनोसी इंडिविजुअल कोनोसी एजेंट रो कोनोसी कंपनी कोनोसी वर्कर कोनोसी हाउस होल्ड तार जदि इकोनॉमिक बिहेवियर हमें स्टडी करूचे से आपनकर माइक्रो इकोनॉमी तो मोटा मोटी तरीका रे कहया गले कोनोसी कंट्री रो जतबेले हमें इकोनॉमिक पार्ट स्टडी करू दैट्स कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमी जतबेले कोनोसी इंडिविजुअल बा व्यक्तिगत भाबरे कोनोसी व्यक्ति विशेष कोनोसी कंपनी कोनोसी कॉर्पोरेट तांकर जतबेले हमें कोनोसी इकोनॉमिक स्टडी करू दैट्स कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमी क्लियर तो मैक्रो इकोनॉमी रे कोन जाए ना मैक्रो इकोनॉमी रे जीडीपी जाउची इन्फ्लेशन जाउची अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कैपेसिटी इनकम ये सबु जिनिस आपनकर मैक्रो इकोनॉमी रे जाए जीडीपी एक माध्यम जेपरी आपनकर नेशनल इनकम कैलकुलेशन करबा पई कि इन्फ्लेशन दरदाम वृद्धि एम्प्लॉयमेंट रोजगार एवं बेरोजगारी किमती आपनकर देश रे सृष्टि होउची एग्रीगेट डिमांड साधारणतः आपनकर डिमांड केते रहउची मार्केट रे ताकू स्टडी करबा देन कैपेसिटी ऑफ इनकम आपनकर कंट्री रे इनकम साइज बा वॉल्यूम केते ये सब जाक आपनकर मैक्रो इकोनॉमी रे अंश विशेष रही थाए जदि माइक्रो इकोनॉमी भीतर जाय जे इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन द पीपल जो इफेक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स ऑन द पीपल जदि गोटे साधारणतः गोटे गृहर थिबा लोकर किमिति ऊपर प्राइस रो प्रभाव पडुची लेबर मार्केट
कंज्यूमर बिहेवियर सप्लाई ऑफ गुड्स ये समस्त जिनिस आपणकर माइक्रो इकोनॉमी रे जाइथा दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जिनिस मोस्ट ऑफ यू हैव मोस्ट अवेयर अबाउट दिट बिकॉज इट्स अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड यू नो अबाउट इट सो branches of the economy basically deal करे macro economy and as well as micro economy. Go to the next slide. So types of economy जदि देखिबा साधारणतः हमर types of economy economics हमर बहुत वर्षर रहिछि तो साधारणतः economics हमर गोटे अछि that is the traditional economy और traditional economy deal करे आपनकर barter system को आपण माने साधारणतः barter system को कहि परिबा लेना देना प्रथा अर्थात आगुर जेतबळे ना पैसा थिला ना करेन्सी थिला ना किछि जिंस थिला साधारणतः गोटे लोकर कोनोसी जिंस आवश्यकता रहउछि ता पाखरे अवेलेबल बा ता पाखरे उपस्थित थिबा वस्तु को से ता परिवर्ते से जो वस्तु ताकू दरकार ता सहित से एक्सचेंज करिकरी बा लेना देना करिकरी से वस्तु पाइबाटा दैट इज कॉल्ड बाटर सिस्टम लेट सपोज गोटे लोक पाखरे कोन रहिछि ना धान रहिछि और ताकू कोन दरकार ना डाली दरकार तो धान थिबा लोक डाली पाखु जीव धान देव एवं प्रति बदल कौन हम ना डाली नहीं आसो आम आजिकल प्रति गृह ये भली सिस्टम देखीचे आज भी चली किंतु बेसिकली ये बहुत पुराना समय कथा जितेबाला आपणकर मार्केट रे पैसा बा करेन्सी बेली कौन जिनस जितेबाला नथिला ये हूँ ट्रेडिशनल इकोनॉमी बा बाटर सिस्टम रो अंश विशेष नेक्स्ट जदि समय क्रम जो आम इतिहास वृद्धि गला इकोनॉमी भी आपणकर खोलीगला तो साधारणतः जो इकोनॉमी आपणकर डील करे दैट इज आपणकर जो बेसिक इकोनॉमी को आमे देखुचे मार्केट रे वर्तमान सो बेसिकली तीनोटी इकोनॉमी को आमे स्टडी करछे दैट इज आपणकर मार्केट इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी तो मार्केट इकोनॉमी को भी आमे कहि परिबा इट्स कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बा जदि ओडिया रे कहा जिवो पूंजीवाद अर्थनीति अर्थात ये इकोनॉमी रे कौन हुए ना साधारणतः जेते वस्तु बा गुड्स कम अपन सर्विसेज जहाँ भी आमे प्राप्त करछे से सबु बनेइबारे तार दर निर्धारण करिबारे सरकारंकर कोनोसी इन्वॉल्वमेंट न थाए अर्थात ये समस्त प्रक्रिया साधारणतः घरोई कंपनी मानक द्वारा हेइथाए किंबा घरोई व्यक्ति विशेष इथरे कोन होइतान संश्लिष्ट होइकी रहितांती दैट्स कम अंडर द मार्केट इकोनॉमी रे ठीक अछि एवं ये सब प्रक्रिया रे सरकार कोनोसी हस्तक्षेप करंती ना नो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोलिंग सच इकोनॉमी तो ये इकोनॉमी वर्तमान क्यों देश मानक रे चलछि साधारणतः वर्तमान यूएस और हांगकांग भली देश मानक रे ये इकोनॉमी वर्तमान चालुछि क्लियर से बळी जदि हमें देखिबा जे कमांड इकोनॉमी also known as बा planned economy also known as आपनकर सोशलिस्ट इकोनॉमी बा आपण ओडिया रे कहि परिबे साम्यवाद अर्थनीति साम्यवाद सबु समान आमे समस्त समान रहिबा तेणु ये क्षेत्र रे कोन हुए ना कोनोसी देश रे ना केही मास्टर रहिबे ना स्लेव रहिबे अर्थात ना केही मालिक रहिबे ना केही तांकर श्रमिक रहिबे आमे समस्त समान तेणु से क्षेत्र रे कौन हुए ना आपणकर छोटरू छुंची ठारू उड़ा जहाज पर्यंत समस्त जिनस किए बनेबे ना सरकार बनेबे ठीक अछि ना तो समस्त प्रकार सरकार निजे प्रोडक्शन करिवे ताकू डिस्ट्रीब्यूशन भी करिवे और क्यों प्राइस रे बिक्री करिवे दैट्स आल्सो द कम अंडर द कमांड इकोनॉमी बा सोशलिस्ट इकोनॉमी इथरे कोनोसी केही भी मालिक रहबेन कारण जेतेबेले कोनोसी साम्यवाद देश रे जेतेबेले सरकार गठन होइता से लोक मानकु नै थाए साधारणतः सरकार लोक मानकु नै थाए तेणु तर सरकार सब जिनसर मालिक हेबे दैट इकोनॉमी कम ऑन द कमांड इकोनॉमी एवं कमांड इकोनॉमी रो बड़ उदाहरण थिला आपनकर गोटे समय रे यूनाइटेड सोवियत रूस जोडा कि यूएसएसआर हला जे कि वर्तमान आ नाही केवल रशिया रही जाईची तो इथरे कोन होतिला ना समस्त जिंस सरकार नोथिले एवं सरकार सब डिसीजन निजे ही करूथिले इवन इफ आपनकर प्राइस भी सरकार सेट करूथिले वर्तमान किछि देश रे एई भली सोशलिस्ट इकोनॉमी देखा जे जेमति कि आपनकर क्यूबा एवं नॉर्थ कोरिया रे क्लियर तो ये इकोनॉमी रे कौन हुए ना बेसिकली लोक मानकु सेल्फ रिलायंस ऊपर निर्भर हबा को पड़े बुझा पड़ुची क्लियर टे कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु जे आपन को बुझा पड़ुची मु ऑडिबल होची कि नै टिके कहि दियंतु समस्त पूरा साइलेंट हे जाइछंती
ओके ठीक अच्छे मुझे आशा करी आप जल्दी जल्दी कमेंट्स लगतु जदि आपको किसी बुझे असुविधा होता तो मुझे आपको पुनर्बार रिपीट करी ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट देखा मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी रे थैंक यू LBSNN प्रतीक शर्मा थैंक यू सो मच ओके सो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन कहे ना जोठारे आपणकर गवर्नमेंट एवं प्राइवेट एंटिटी बोथ गवर्नमेंट सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर आपणकर दुई जन जाक को एक्जिस्ट करिवे हला को एक्जिस्ट करिवे से सेक्टर रे कौन हबो को आमे मिक्स्ड इकोनॉमी कहिथौ अर्थात लेट सपोज आमे देखुचे गोटे सेक्टर होउची लेट सपोज आमे स्टील बनेबा स्टील स्टील जदि आपणकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करूची स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करूची से क्षेत्र रे आपणकर टाटा भी आपणकर स्टील भी बनौची स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो ए गवर्नमेंट कंपनी और टाटा आपणकर गोटे प्राइवेट कंपनी ता अर्थ कहबा को गले दुई जन जाक निज निजर प्रतिद्वंदी ना नहीं ओके थैंक यू शिवा लिनक्स तो ये प्रकार इकोनॉमी को बेसिकली आमे कहिथौ मिक्स्ड इकोनॉमी जो थरे कि कौन हुए ना सरकार सबु क्षेत्र रे इंटरवेंशन करे नहीं किंतु जेतेबेले आवश्यक पड़े इंटरवीन करबा पई कि सेतेबेले कौन करे ना सरकार इंटरवीन करे ठीक अछि अर्थात द इकोनॉमी इज फ्री ऑफ गवर्नमेंट द इकोनॉमी इज फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन बट द गवर्नमेंट विल रेगुलेट व्हेनेवर इट फील्स नेसेसरी तो जितेबाला आपंकर कौन जिनस बहुत सेंसिटिव इश्यूज हो जाए गवर्नमेंट लोक सरकार को लगे कि लोक मैंने साधारणतः असुविधार सम्मुखीन होती से कौन है ना गवर्नमेंट आपंकर इंटरवीन करें इकोनॉमी तो साधारणतः आम विश्व में भारत एक ज्वलंत उदाहरण ए प्रकार इकोनॉमी तो साधारणतः भारत में आपंकर क्यों इकोनॉमी चली दैट इज आपंकर मिक्स्ड इकोनॉमी क्लियर ऑल ऑफ यू ठीक कमेंट सेक्शन हाय कह दिंतु ओके नेक्स्ट आमे जीवा तो इंडियन इकोनॉमी रो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स रही जोठारे कौन होची ना आमर जो आमे जो प्रथम थर जो देखिले जे रिसोर्सेस को कौन करिबा ना गैदर करिबा कारण रिसोर्सेस आपनकर असरंती नुह सरंती बा स्क्यारी सरंती रिसोर्सेस को नेकरी आमे कौन करिबा ना आमे प्रोडक्शन करिबा डिस्ट्रीब्यूशन करिबा हला तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर रही तो साधारणतः इंडियन इकोनॉमी रे आपणकर एक्टिविटी वाइज बेस ऑन द एक्टिविटी अर्थात जोठी लोक माने काम करि थांती एक्टिविटीज वाइज जब देखिबा साधारणतः इंडियन इकोनॉमी को आमे तीनोटी कैटेगरी रे रखिचे साधारणतः प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी हला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सत्यरंजन बेरा हाय तो प्राइमरी सेक्टर इमित एक सेक्टर जहा उपरे आमे संपूर्ण भाव में मदर अर्थ उपरे आमे कौन करू ना निर्भरशील होइतो अर्थात जो यही सेक्टर ठारू आमे समस्त उत्पादन जोटा आमे रिसोर्सेस गैदर करू ताहा संपूर्ण भाव में आमर जो पृथ्वी ठारू ही आमे पाई थाउ ठीक अछि ना पूरा आमर पृथ्वीर गर्भ भितर लुचि रही समस्त जिनस आमे ताठू पाइथाउ किंबा पृथ्वीर उपादान ठारू पाइथाउ बेसिकली आपणकर प्राइमरी सेक्टर रे आपणकर माइनिंग सेक्टर भी आसीबो गोटे मिनिट लेजर एक्टिविटी माइनिंग सेक्टर आसीबो खनिज संपद विभाग देन आपणकर एग्रीकल्चर जोठी आमे कृषक माने साधारणतः काम करंती देन आपणकर डायरी फिशिंग फॉरेस्ट्री दिस ऑल आर कम्स अंडर द आपणकर प्राइमरी सेक्टर रे देन ए प्राइमरी सेक्टर उत्पादित हेउथिबा द्रव्य को जदि आमे कोनोसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं जिबा देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर रे क्लियर तो ये दुईटी जिनिस बोथ प्राइमरी सेक्टर एवं सेकेंडरी सेक्टर जोठी आमे गुड्स प्रोड्यूस करि थाउ से भली टर्शियरी सेक्टर रे सेवा प्रोड्यूस करथाउ बा सर्विस प्रोड्यूस करथाउ साधारणतः सेवा क्षेत्र रे आपणकर हॉस्पिटल्स टूरिस्ट प्लेसेस बाय होटल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस माने ये समस्त आपणकर सेवा क्षेत्र रे बा सर्विस सेक्टर रे अंश विशेष रही थांती साधारणतः मु भी आपणकर सेवा सर्विस सेक्टर जाउची हाँ ना नहीं
तो भारतर इकोनॉमी रे सर्विस सेक्टर रो सबुठु अधिक माने कंट्रीब्यूशन रही हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर एटा आपनकर बेले बेले क्वेश्चंस आसे जे क्यों सेक्टर रु आपनकर कंट्रीब्यूशन अधिक आसे भारतीय अर्थनीति को तले आपनकर आंसर कोन हो कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु क्लियर ओके तो ये जो सेवा क्षेत्र जो जिनस गुड़िक आम साधारणतः प्रोड्यूस करुचे से कौन होची ना आम देशर कौन होची ना आय होची जदि कोनोसी देशर नागरिक माने जदि कोनोसी प्रकार माने से देश को आपणकर माने से देश किसी रोजगार करूछंती within the boundary of the country or with outside the boundary of the country अर्थात लेट सपोज ये गोटे आपणकर गोटे देश तो ये देश अनेक लोक रहउछंती तो ये लोक माने साधारणतः जो रोजगार करूछंती ये देशर भौगोलिक सीमा भितरे किंबा अन्य एक देश रे जेते रोजगार करछंती कोन ना से देशर नागरिक माने बा रेसिडेंट्स माने से देशर ये इनकम को आमे नेशनल इनकम कहि थाउ क्लियर तो देशर नागरिक माने जो रोजगार करती सामूहिक भाव में ताहा देशर जातीय आय भाव में काउंट होता है क्लियर बुझा पड़ा तो जदि आमे हमर जातीय आय बा नेशनल इनकम को आमर पॉपुलेशन द्वारा जदि आमे डिवाइड करिबा अर्थात आमर जनसंख्या द्वारा जदि डिवाइड करिबा ताहाले पर कैपिटा इनकम बा मुंड पिछा आय हमकु मिली थाए अर्थात मुंड पिछा आय कोन ना मुंड पिछा आय आपनकर हबो ना समुदाय आय बा नेशनल समुदाय जातीय आय विभक्त क जनसंख्या ताहाले आम प्रति व्यक्ति मुंड पिछा आय हमकु मिली थाए क्लियर तो ए मुंड पिछा आय रु ही आमर वर्ल्ड बैंक कौन करे ना गोटे देश डेवलप कि डेवलपिंग कि अंडर डेवलप ए भली कैटेगरी रे रखी अर्थात डेवलपिंग अंडर डेवलप ये सब इनकम रे डिसाइड है तेणु वर्ल्ड बैंक कौन करी ना संपूर्ण देश आपण भारत आम पृथ्वी रे पाखापाखि 198 रु अधिक देश गुड़िक रही तो ये देश गुड़ी को आपनकर चारोटी ग्रुप रे रखा है लो लोअर मिडिल अपर मिडिल एंड हायर इनकम ग्रुप्स रे देश भितर रखा जाय लो इनकम कि जतबेले 2020 मसिया रे ये सबु जाक डॉलर रे आपनकर काउंट करा जाउची डॉलर रे यूएसडी रे तेणु कोनोसी देश जदि $1035 आपनकर वर्ष को कमेई पारु नाही प्रति मुंड पिछा आय कारण आपनक देश डेवलप्ड हबो कि अंडर डेवलप्ड हबो आपनक देशर मुंड पिछा आय ऊपर निर्भर करिवो मींस इट डिपेंड्स अपॉन द पर कैपिटा इनकम टू डिसाइड द वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन तो मन रखिए बेले बेले क्वेश्चन आपनकर पड़े जे आपनकर जो कंट्री रो स्टेटस बा इकोनॉमिक स्टेटस आमे किमिति जानू तार आपनकर आंसर हबो तार पर कैपिटा इनकम द्वारा जानू जैसे डेवलप कि अंडर डेवलप कि डेवलपिंग कंट्री ठीक अच्छे बुझा पड़ा तेणु जदि कोनोसी देश जोटा 2020 मसीह थिला 1035 वर्तमान हो जाए 1046 जदि कोनोसी देश 1046 माने लेस देन $1046 रु आपनकर कम इनकम कोच माने पर पर्सन पर कैपिटा इनकम जो देश रे पर कैपिटा इनकम $1046 रु कम रहुची हैला $1046 रु कम रहुची से देश को आमे लोअर इनकम ग्रुप्स बा लोअर इनकम कैटेगरी रे आमे रखी थाउ ठीक अछि जदि कोनोसी देश 1046 रु 4095 भितर तार पर कैपिटा इनकम रहुची ताकू आमे लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कहि थाउ ठीक अछि सेही भली आपणकर जदि कोनोसी देश $4096 रु $12,695 पर्यंत ये सब जाक डॉलर रे इनकम आसुची ताहले हमें अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स देश कहि थाउ आ हायर इनकम रे तो $12,695 आपणकर आसी थाए क्लियर तो आम देश आपणकर अपर मिडिल इनकम ग्रुप रे आसी थाए आसुची देश आम देशटी ठीक अच्छी ना
तो देश गुड़िक जमती कि आपन सोमालिया भली देश गुड़िक आपणकर लोअर इनकम ग्रुप्स रे आसी थाए ठीक अछि ना तो आगुरु ये डेटा गुड़ाक थिला 2020 बेलू को रिसेंटली आपणकर जुलाई 2021 रु ए डेटा रे परिवर्तन दैट्स नॉट आम पे इंपोर्टेंट आम पे इंपोर्टेंट होची कि देश गुड़िक केमिति आमे डिवीजन करछे डेवलपिंग रे ना डेवलप्ड रे ना अंडर डेवलप्ड रे एवं ताहा कहा ऊपर निर्भर करची ना से देशर पर कैपिटा इनकम रे आम क्लियर टे कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु नेक्स्ट देखिबा आमे ये जो नेशनल इनकम साधारणतः मेजरमेंट करू किपरि तो 1949 बेलू जो आम भारत स्वाधीन है 1947 रे 1950 रे आमर कौन होइतिला ना संविधान लागू होइतिला तो जदि आमे आमर संविधान हिसाब रे जीवा संविधान पूर्व लागू होबा पूर्वरु आमर गोटे नेशनल इनकम कमिटी गठन करा जायतिला एवं नेशनल इनकम कमिटी रो दायित्व थिला कि आपणकर भारतर जातीय आय केते आमको एस्टिमेट करिबा तेणु से आमको विभिन्न सूत्र देइथिले जे कौ सूत्र रे आमे आम जातीय आय को निर्णय करि परिबा तो दीज आर द बेसिक 5 थिंग्स जहा द्वारा कौन हुए ना आमे आम देशर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करथाउ जो थरे के आसुची ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट ठीक अछि चलंतु आमे गोटे थरा देखिबा प्रथमे आमे चलंतु देखिबा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जीडीपी कोन तो जीडीपी रो फार्मूला होउची जीडीपी रो फार्मूला होउची ना सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट भितरे एक्स माइनस एम क्लियर सी आपणकर दर्शाए कंजप्शन कंजप्शन आई दर्शाउची ना टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से बड़ी जी आपणकर दर्शाए टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एवं आपणकर एक्स दर्शाए एक्सपोर्ट को आ एम दर्शाए आपणकर इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को आ एम दर्शाए आपणकर इंपोर्ट को ताहले मते कमेंट सेक्शन रे जल्दी कहले जो मु ये लिखिछि x माइनस m बा x माइनस m भारत भली देशर ये जो क्वांटिटी जो आपणकर चंद्रबंधनी भितर रहिछि यार वैल्यू पॉजिटिव आसीबो ना नेगेटिव आसीबो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखंतु आंसर कौन आसुची किए कहि परिबे मैं अपेक्षा करिछि किए कहि परिबे So our answer मन रखिबे ऑलवेज नेगेटिव होबो कारण भारत भली देश रे आपनकर एक्सपोर्ट सदा बेले कम थाए अर्थात भारत रप्तानी कम करे एवं आमदानी बा इंपोर्ट अधिक करि थाए ठीक अछि ना तो जतले हमकु देश को उन्नति करिवार अछि ताहले ये जो क्वांटिटी रहउची ये क्वांटिटी को आमे नेगेटिव रु पॉजिटिव को जतबेले आनी परिबा सेतबेले ऑटोमेटिकली हम जीडीपी रो ग्रोथ आपनकर ऑटोमेटिकली हबो क्लियर तेणु जीडीपी रे जेमति मु आपनको फार्मूला लिखिली जे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ठीक अछि आई तो सी होउची आपनकर कंजप्शन
आपणकर कंजप्शन बा आपण केते कंजप्शन करूछंती। लेट सपोज मु जेतेबेले दुकान को जाउची मु सदाबेले कौन कहूची ना मु जेतेबेले 10 टंका देउची मु गोटे कोल्ड ड्रिंक्स पिउची हाँ ना नहीं साधारणतः आपण माने कोल्ड ड्रिंक्स पिउथिबे वर्तमान खरा दिने क्लियर ना नहीं जेतेबेले मु 10 टंका देउची मु सेतेबेले कोन होची ना गोटे आपणकर कंजप्शन बा क्वांटिटी रो जिंस पाउची जदि मते मल्टीपल दरकार आपणकर कंजप्शन अर्थात मते दुईटी रु अधिक कोल्ड ड्रिंक्स दरकार ता माने मते अधिक रु अधिक पैसा देबाकू पड़िबो ता माने मु जेते प्राइस खटेबी सेते अधिक क्वांटिटी मोर जिंस पाइबी एवं आज ए होल ये मोर दर्शेबो कंजप्शन को हाँ ना नहीं तेणु मोर आई कंज्यूम द प्रोडक्ट मु कौन करी ना अधिक रु अधिक मते पैसा खर्च करिया पड़िबो अधिक पैसा खर्च कले मोर अधिक इनकम माने क्वांटिटी रो जिंस पाइबी तेणु P प्लस Q तेणु प्राइस सदा बेले आपणकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे आपणकर कंजप्शन पाई की ठीक अछि मोर आपणकर कंजप्शन हबो दैट मीन्स आपणकर अधिक प्राइस दबाकू पड़िबो आ अधिक क्वांटिटी भी पाइबे तेणु जेतेबेले आपण अधिक प्राइस दबाकू सक्षम होउछंती ता माने आपणकर आय रे भी वृद्धि घटुची हाँ ना नहीं आर आवश्यकता कौन मु प्राइस ऊपर काहे की फोकस करूची मु आउ टिके पर आपनको कहबी ठीक अछि ताहले मते जेतेबेले जीडीपी कैलकुलेट करिया को पड़ सेतेबेले मते प्राइस एक्चुअली कौन साधारणतः प्राइस आपणकर दुई प्रकार आसी थाए गोटे ला फैक्टर कॉस्ट माने प्राइस को नेकी कॉस्ट आस्ता है ना नहीं फैक्टर कॉस्ट कौन ना आपणकर गोटे वस्तु बा कमोडिटी प्रस्तुत करिया पई कि बा तयारी करिबा पई कि आपनको केते मात्रा रे खर्च करिया को पड़े जे प्रोड्यूसर साधारणतः जदि मु आपणकर सप्लाई चेन रो ग्राफ करी प्रथमे आपणकर जदि सप्लाई चेन आसे प्रथम व्यक्ति थाए प्रोड्यूसर थाए ये प्रोड्यूसर से व्यक्ति जे कि आपणकर इनपुट्स को नेगिरी कौन करे ना हमर आउटपुट रूप रे कमोडिटी को देई थाए तले इनपुट रे कौन दबो कौन देले गोटे प्रोड्यूसर गोटे जिंस पाइबो ना प्रथमतः रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल क्योंठि थिबो ना दीज आर द रिसोर्सेस देन आपणकर लेबर ये भी आपणकर ह्यूमन रिसोर्स हाँ ना नहीं देन आपणकर कैपिटल एटा भी आपणकर फाइनेंशियल रिसोर्स तो ये सब इनपुट देला परे जाइकरी जणे आपणकर आउटपुट पाइबो तेणु ये इनपुट रो आउटपुट पाइबा भितरे जो आपणकर खर्च करिया पड़े दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट आ ये सब जाक हेउची आपणकर फैक्टर कॉस्ट किछि कमोडिटी रे कोन हुए ना आपणकर फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कला बेले आपणकर कोन हुए ना आपणकर कॉस्ट ऑफ फैक्टर सहित आपणकर सब्सिडी को भी अलाउ करा जाय थाए सब्सिडी भी दिए थाए अच्छा मते कहले सब्सिडी क्यों उठिया मिले ना सरकार को मिले किछि वस्तु रे समूह वस्तु रो ने समस्त वस्तु रे आपन को सब्सिडी मिलेनी से वस्तु मिले जोटा कि सरकार को तरफ रु तादरे प्रोत्साहन दिया जाय थाए अधिक रु अधिक लोक मानक पाखरे पहुंचीबो एवं कम दर रे पहुंचीबो से क्षेत्र रे कोन होय ना सरकार आपनकर कोन करंती ना सब्सिडी घोषणा करिथांती ठीक अछि ना दैट्स कॉल्ड आपनकर फैक्टर कॉस्ट क्लियर किंतु जेतेबेले प्रोड्यूसर पाखकू जेतेबेले आपनकर होलसेलर पाखकू आसे वस्तुटी प्रोड्यूसर तो बनै देला ना बनैला परे होलसेलर पाखकू एवं होलसेलर पाखरु जेतेबेले आपनकर रिटेलर एवं रिटेलर पाखरु जेतेबेले आपनकर कंज्यूमर पाखकू आसे सेतेबेले जो प्राइस रे आसे सेटा होची आपनकर मार्केट प्राइस एवं मार्केट प्राइस कौन कहे ना मार्केट प्राइस कहे जे मार्केट प्राइस होची फैक्टर कॉस्ट प्लस सितरे लागि थिबा टैक्स मार्केट प्राइस सेतेबेले डिसाइड हबो जेतेबेले प्रत्येकटी वस्तु ऊपर हमकु कोन दबाकू पड़े टैक्स दबाकू पड़े ना नहीं तेणु फैक्टर कॉस्ट सहित जेतेबेले आपनको टैक्स ऐड हे जाय सेतेबेले आपनको मार्केट रे से वस्तुटी उपलब्ध हेइ थाए ठीक अछि ना नहीं एवं से वस्तुटी अधिक रेट रे न बिक्री हबो सेति पई सरकार कोन करंती ना किछि वस्तु ऊपर सब्सिडी प्रदान करथांती ठीक अछि बुझा पइला ताहाले सर आपण एटा काहे कि मते वर्तमान कहउचंती ना देखंतु जीडीपी रो आउ गोटे डेफिनेशन होउची
ना जेते आपणकर गुड्स बना जाउची सर्विसेस बना जाउची ताहा एक देशर बाउंड्री भितर लेट सपोज जदि मु एटा गोटे देश बनैली ये देश रे मानेकर दुईटी वस्तु आपणकर तयारी हला लेट सपोज ये दुईटी वस्तु तयारी हला ये गोटे वस्तुर दाम लेट सपोज 30 रुपीज हला ताहले जदि मु कहिबी किछि उत्पादन हैनी केवल ए दुईटी वस्तु आपणकर उत्पादन हैछि ताहले से देशर जीडीपी के हमें केते करबा ना ये दुईटी वस्तुर आपणकर आर्थिक मूल्य जेतिकी सेतिकी होछि देशर जीडीपी अर्थात 30 + 30 इक्वल्स टू आपणकर 60 रुपीस तो ये होची से देशर किंतु इठी कंडीशन कोन ना विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन जहां आपणकर से देशर बाउंड्री रे तयारी हेइथिबो ठीक अछि ता माने जो मु इठी फार्मूला लिखुची कि सी इतरे जो कंजप्शन होउची ये समस्त कंजप्शन आपणकर विद इन द कंट्री भितरे कैलकुलेट करबा को पड़ी थाए ठीक अछि बुझा पड़छि ना नहीं कमेंट सेक्शन लिखि दियंतु ओके तापरे आपणकर ये जो जीडीपी साधारणतः दुई भाग रे विभक्त गोटे हला नॉमिनल जीडीपी आउ गोटे हला रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आउ गोटे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कौन कहे जे अगेन मु फार्मूला को आसीबी जे जीडीपी रो फार्मूला होची आज्ञा c + i + g + x ब्रैकेट रे x - a तो ये जो c रहउची मु c रो फार्मूला कौन लिखिथिली p * q ता अर्थ कमोडिटी रो प्राइस एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस हिसाब रे जो प्राइस आपन को डिसाइड हेता है से होची आपन को नॉमिनल जीडीपी अर्थात जेतेबेले मु कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट प्राइस रे जदी आपन को वस्तुटी कैलकुलेट करा जाउची माने वर्तमान जदी मु जीबी मते सपोज गोटे मु गोटे गाड़ी किनिली लेट सपोज मु एक्टिवा 6G गाड़ी किनिली ठीक अछि एक्टिवा 6G रो वर्तमान मूल्य होची पाखापाखी 95,000 टंका समस्त खर्च को मिसेइला पर टैक्स फैक्स XYZ सब मिसेइला पर 95,000 टंका तेणु मो देशरा किछि उत्पादन होनी केवल एक्टिवा आपनकर 6G उत्पादन होची जेते मु उत्पादन कली 6G से मोर कंजप्शन ने पळे आसीबना नै आ कंजप्शन सदा बेले डिपेंड करे आपनकर डिमांड ऊपर जेते लोक माने आपनकर डिमांड करिवे कंपनी माने सेही भली भाबरे आपनकर वस्तु बनेबे ना नहीं डिमांड करूछंती माने कोन सेगुडा को कंजप्शन करिवे बा उपयोगी करिवे व्यवहार करिवे यस और नो तो जेतेबेले आपनकर डिमांड आपनकर राइज हबो सेतेबेले अधिक रु अधिक उत्पादन हबो ह ना नहीं गुड मॉर्निंग राघवन पुष्पलता मो क्लास आपन को बुझा पड़ुची तो टिके कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आपण माने लेट रे जॉइन करले तो जेकोसी प्राइस को आमे कैलकुलेट करू करंट प्राइस बेसिस रे अर्थात जो जीडीपी को आमे करंट प्राइस बेसिस रे आमे कोन करिथाउ कैलकुलेट करिथाउ सेतो बळे आमे ताकू कहिथाउ नॉमिनल जीडीपी अच्छा सर नॉमिनल जीडीपी कहि देले सर रियल जीडीपी कोन ना आमे कोन करिबा ना सेम कैलकुलेशन करिबा प्रोडक्शन रो आपनकर वैल्यू किंतु बेस ईयर हिसाब रे आ बेस ईयर केते रखा जाईची बेस ईयर वर्तमान रखा जाईची जोटा कि भारत रो जीडीपी रो कैलकुलेशन करिया पई कि 2011-12 आमे इमिति सहज ऊपर आउ टिके बुझी परिबा जी आपनकर जीडीपी को लेट आपनकर एक्टिवा 6G गोटे गाड़ी एक्टिवा 6G गाड़ी आपनकर वर्तमान मार्केट प्राइस रे लाख टंका रे बिक्री होउची ठीक अछि 1 लाख रुपीस रे आपनकर बिक्री होउची ठीक अछि जदि आपण वर्तमान प्राइस हिसाब रे जदि एक्टिवा 6G को आपण नेबे आ आपण देशरा किछु उत्पादन होनी अजम्पशन हला आपण देशरा किछु उत्पादन होनी ताहाले वर्तमान बा करंट प्राइस हिसाब रे जदि नेबे दैट इज आपणकर नॉमिनल जीडीपी अब केते उत्पादन अब ता डिपेंड करबा आपणकर डिमांड ऊपर ह ना नहीं
सेई भली आपणकर रियल जीडीपी हम सेतबले ना ए एक्टिवा गाड़ी 2011-12 बेले को केते टंकारे बिक्री होइथिला ना सर 2011-12 बेले को ये आपणकर 65,000 रे बिक्री होउथिला 2011-12 बेले को एबे स्वतःप्रत भाव में आपणक मनरे क्वेश्चन आसीबो सर ये तो बहुत कमी जीवो ना कमिबो केमिति देखंतु आपण चिंता करंतु निज घर भितरे जे 2011-12 बेले को आपणक घरे केते जण लोक गाड़ी चलाउथिले ना सर जणे लोक केवल बापा चलाउथिले 2021-22 बेले को केते जण आपणकर गाड़ी चलाइलेनी ना सर बापांकर गोटे गाड़ी मोर गोटे गाड़ी मो भौणीर गोटे गाड़ी कहिबार उद्देश्य होउची जो सी रो फार्मूला मु लेखुतेली P * Q Q आपणकर वृद्धि घटुची ना नहीं क्वांटिटी रे वृद्धि घटिची ना नहीं यस और नो सो ये जो 2011-12 कहीं की दर्शाए ना ये विगत दशंधि भितरे माने 10 इयर्स भितरे आमर डिमांड केते राइज करची और जेते डिमांड राइज करिवो ये हमको इंडिकेट करिवो जे आमर इनकम रे भी कोन हेची ना वृद्धि घटिची आम इनकम रे भी कोन हेची ना वृद्धि घटिची क्लियर तेणु मोटामोटी भाव में कहवाकू गले आमर जीडीपी साधारणतः नॉमिनल जीडीपी जेतेबेले आमे कैलकुलेट करिथौ ऑब्वियसली आर जो वैल्यू आसीबो ये अधिक आसीबो रियल जीडीपी अपेक्षा ताले सर आमे काहे की कैलकुलेट करूचे ना रियल आम सरकार कौन करे ना सदा बेले जेतेबेले रियल जीडीपी रो डाटा दिए सी आपणकर रियल जीडीपी ऊपर दिए ना कि नॉमिनल जीडीपी रे दी थाए कारण नॉमिनल जीडीपी रे प्राइस राइज बा वस्तुर मूल्य वृद्धि एक टेम्परारी फेनोमेना होता है टेम्परारी फेनोमेना कारण बेले बेले कौन हुए ना हठात वस्तु मानकर प्राइस बढ़ी जाए जदि कोनोसी आपणकर कोनोसी प्रकार मूल्य कोनोसी एक सिचुएशन आपणकर एक्सट्रीम सिचुएशन हे गला आपणकर मूल्य होते बेनजीर बेगम गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बेनजीर बिलेटेड ईद मुबारक क्लियर तो टेम्पररी फेनोमेना तेणु सदा बेले रियल जीडीपी ऊपर ही सरकार कौन करती ना आपणकर डेटा कैलकुलेट करि थांती ठीक अछि तो जीडीपी आपणकर साधारणतः केते भाग रे हला मु कहली ना आपणकर नॉमिनल जीडीपी एवं रियल जीडीपी जीडीपी कौन ना मन रखिबे ना जेते आपणकर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होउची विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग वन पीरियड माने गोटे वर्ष आपणकर केते बळे ना सेटा को जाय अकाउंटिंग ईयर तो भारत रे अकाउंटिंग ईयर आपणकर 1 अप्रैल स्टार्ट हेई ता वर्ष 31 मार्च पर्यंत पीरियड को आमे अकाउंटिंग ईयर कहिथौ जोटा कि आपण माने समस्ते अवगत अछंती ठीक अछि तो ये गोटे मेथड जो थरे कि आमे कोन करछे ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूछे ठीक अछि किंतु ये जो ट्रेडिशनल फार्मूला आपण देखिले जीडीपी रो C + I + G + X - M ये फार्मूला 2015 मसीहा ठारू आरे परिवर्तन घटी जाइछि वर्तमान जो जीडीपी कैलकुलेशन फार्मूला व्यवहार करा जाउछि दैट इज जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्स ऑन द प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी ऑफ द प्रोडक्ट एबे स्वतःप्रत भाव में क्वेश्चन आसीबो सर जीवीए कोन जीवीए होउछि ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड इन ए कमोडिटी अर्थात किमिति सर ग्रॉस वैल्यू किछि बुझा पडुनी देखो आपण माने रिसेंटली धान बिक्री करथिबे धान को आपण क्विंटल को बिक्री करथिबे 1950 टंका रे अर्थात 100 केजी आपणकर पैडी बा आपणकर धान को आपण कोन कले ना 1950 टंका रे बिक्री करथिले ताहाले 1 केजी केते टंका रे आसिला ना 19 टंका 50 पैसा रे आपणकर आसीबो
अच्छा सर 19 टंका 50 पैसा किंतु धान रु आपणकर राइस जेतेबेले हबो एवं आपणकर रिलायंस फ्रेश रे जेतेबेले आपण ताकू किनिया को जिबे ताहाले या आपण को 42 टंका रे बिक्री होउची मो 5 टंकिया चाउल कथा कहूनी जोड़ा आम किणुचे साधारणतः भाव है कारण तादरे सरकार सब्सिडी रोची ठीक अच्छे ना ताहले 19 टंका 50 रे मिलुथिबा धान कौन चमत्कार करदेले कि 42 टंका कन्वर्ट हो गले आपण एबे कहबे सर इथरे आमे ये जिंस ऐड कलु सी जिंस ऐड कलु एक्स कलु वाई कलु जेड कलु दीप्ति महाराणा गुड मॉर्निंग तो ये सब जिंस कलु तो जो आपण जिंस कले अर्थात धान को आनिले गोटे जगह रु अन्य जगह को ट्रांसफर कले तापरे कौन हला ना आपण तादरे कौन कले ना तार रिफाइनिंग कले बा ताकू आउ टिके पॉलिश कले तादरे अलिया बाहर कर देले चोपा छड़ेले ताकू पैकिंग कले बिक्री कले तापरे ये जिंस जेते जेते आपण तादरे ऐड करी कर चलिले दैट इज द जीवीए दैट इज द ग्रॉस वैल्यू इथरे जो आपण ऐड करिके चली छंती ठीक अछि ना तेणु जेते आपण ग्रॉस वैल्यू ऐड करी चलिबे सेते सेते कोन हबो ना वस्तुर मूल्य वृद्धि घटिबो तो वस्तुर मूल्य वृद्धि बा जीवीए ऐड करे सेते बळे ना जेते बळे आपणकर अधिक रु अधिक डिमांड बढ़ियो जिते आपणकर डिमांड जेते बढ़ी चलिबो जीवीए भी सेते बढ़ी चलिबो किमिति बढ़ी चलिबो ना साधारणतः आपण पाखरे वर्तमान इनकम नाही तो आपण कोन करछन ना 5 टंकिया गोटे चाहा पी दउछंती ठीक अछि ना नाही जते बळे आपणकर इनकम बढ़ी जिवो आपण कोन करिवे ना गोटे ग्लास चाहा पीबे 10 टंकिया चाहा ता माने कोन ये 5 टंका रु 10 टंका रे कोन हला किछि एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हला ना नाही यदि आउ टिके इनकम बढ़िबो दिन आसीबो जे आपण चाहा को आपण कोन पीबे ना 100 रुपीस पर्यंत देइकरी भी पी परिबे यस और नो तो ये तो आपणकर जीवीए ठीक अछि ना नहीं तेणु जीवीए बेसिस रे आपणकर जतरे जीडीपी कैलकुलेट करा जिवो ना दैट बिकम द जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस आपणकर टैक्स माइनस सब्सिडी आ ये आपणकर 2015 मसिया रु मोदी सरकार याकू आपणकर भारतर जीडीपी कैलकुलेशन रे व्यवहार करूची क्लियर बोर है नहीं तो इंटरेस्टिंग लागू जी आम आगू जीवा सर आउ को उपाय आम कौन करिपरिबा ना आम मेजरमेंट करिपरिबा ना आउ गोटे मेथडोलॉजी होची जोथरे कि आम कौन करिपरिबा हमर नेशनल इनकम को मेजर करिबा सी होची आपणकर जीएनपी बा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रो फार्मूला कौन ना सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड ये जो एक्स रो वैल्यू से नेट एक्सपोर्ट केमिति बाहरिबो ना आपणकर बाहरे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट रु आपणकर नेट एक्सपोर्ट बाहरी थाए तेणु ये टोटल फार्मूला आपण को लागुनी चिन्हा परछ बेले सर ते जीडीपी रो फार्मूला ना जीडीपी फार्मूला सहित जदि आमे बाहर देश रु आसुथिबा हमर जो माने भाई बंधु माने अछंती बाहर देश रु हम किछ पैसा दियंती खर्च करिया पई ना नहीं तो जतबेले देई थांती सेटा आपणकर जीएनपी रे कैलकुलेट हेई थाए अर्थात जीडीपी जहा जीएनपी सेया थिंग इज लाइक दैट जीडीपी रे केवल आमे से जिंस कैलकुलेट करू जतबेले आपणक देश भीतर उत्पादित होतिया द्रव्य को कैलकुलेट करथबा जो जिंस प्रोडक्शन आपणक देश भीतर हेते किंतु जीएनपी रे आपणक देश बाहर भी जदि किछि इनकम्स आपणकर आसी थाए ताकू आमे कोन करथाउ ना जीएनपी रे कैलकुलेट करिथाउ ठीक अछि आउ गोटे जिंस आपण एठी मन रखिबे ना एनडीपी मन रखिबे एनडीपी कोन ना सर जीडीपी सुनछु एनडीपी कोन ना बेले बेले कोन हुए ना वस्तु गुडी कर मूल्य वृद्धि कंपाउंड सदाबळे हेते अर्थात लेट सपोज आपण गोटे जिंस रखिले एक्स गोटे जिंस ये एक्स जिंस आपणकर वैल्यू हो माने टाइम पीरियड होची 6 वर्ष पर्यंत रहिबो जे कोनसी गोटे वस्तु आपण 6 वर्ष पर्यंत रखि परिबे 6 वर्ष पर्यंत ये वस्तु आपणकर जीडीपी रे अंश विशेष हबो ना नाही निश्चित भाव में हम जदि जीडीपी रे अंश विशेष हम ता अर्थ कौन ना इथरे कोनोसी ना कोनोसी क्षय हब ना नहीं क्षय बा डेप्रिसिएशन हब ना नहीं तेणु जेतेबेले जीडीपी रु से डेप्रिसिएशन को आपण माइनस करिवे सेतेबेले ता वैल्यू आसे एनडीपी बा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपणकर आसी थाए सेही बळी नेशनल इनकम रे भी जेतेबेले आपणकर डेप्रिसिएशन को आपण ऐड करिवे सी आपणकर हे जे नेट नेशनल प्रोडक्ट बा एनएनपी ता अर्थ जीडीपी रु
जदि आपण डेप्रिसिएशन को माइनस करिवे ये आपणकर एनडीपी आसीबो एवं जीएनपी रु जदि आपण डेप्रिसिएशन को माइनस करिवे आपणकर एनएनपी आसीबो जोटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउ नेट नेशनल प्रोडक्ट आपणकर नारे नामित क्लियर सेही बळी आउ गोटे जिनिस होची आपणकर ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम बा जीएनआई होची ये एज ए होल आपणकर नेशनल इनकम कैलकुलेट करा जाय जो थरे कि हमें रखिचे ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी प्लस आपणकर मनी फ्लो फ्रॉम द फॉरेन कंट्री हैला आ मनी फ्लोइंग टू द फॉरेन कंट्री हैला एठरे कोन हबो ना जेति कि आपणकर फ्रॉम फॉरेन कंट्री आसी थाए अर्थात बाहर देशर लोक मैंने जी आमको पैसा दे था बाहर देशर लोक मैंने कौन बाहर देशर लोक नुह आमर देशर लोक मैंने जो मैंने जाकि बाहर काम कर आमको किसी पैसा दे था दैट इज मनी फ्लोइंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री आम देशर लोक मैंने बाहर देश को जाती खर्च करने से भी आपणकर सेटा आपणकर मनी फ्लोइंग टू द फॉरेन कंट्री तेणु आमर नेट मनी कमिंग आसीजिव केते आम देश को बाहर देश पैसा आसूसी तो एज ए होल ये आमको जनाए ना ग्रॉस नेशनल इनकम क्लियर तो जतरा हमर इनकम हे गला सेते बळे कोन हला ना हमर 5 ईयर प्लान्स हमकु बनाया हला 5 ईयर प्लान्स कोन ना सेति पई कि 1950 मसिया रे हम देशर इनकम को हमें केतमिति खर्च करिबा सेति पई कि आपनकर गोटे प्लानिंग कमिशन गठन करा गला एवं ये प्लानिंग कमिशन कोन कला ना गोटे 5 वर्षीय योजना प्रस्तुत करेला जहा को कहा जाय 5 ईयर प्लान प्रथम 5 ईयर प्लान आपण को 1951 रु 1956 पर्यंत आस्थिला जहा को हम कहा जाय हारोल्ड डामर मॉडल हारोल्ड डामर मॉडल कोन कहे ना आपणकर पैसा संचय केमती प्रथमे करिबा ता ऊपर फोकस करे हारोल्ड डामर मॉडल आ ऊपर हमकु जिबार नै हमकु बस मने रखियार अछि जे प्लानिंग कमिशन केबे गठन होइतिला 1950 रे प्रथम 5 ईयर प्लान केबे गठन होइतिला 1951 रे मॉडल ना कोन थिला ना हारोल्ड डामर मॉडल एवं टार्गेटेड केते हमें ग्रोथ रेट रखिथिले ना 2.1% रो ग्रोथ रेट रखिथिले सर ग्रोथ रेट कोन हमें जानिनु ना देखंतु ग्रोथ रेट किछि नो जीडीपी at current year minus GDP in last year divided by GDP in last year into 100 आपण प्रॉफिट आपणकर परसेंटेज तो अंक करि सारी बेनी आपण माने मैथ रे तेणु आप जानी थिबे ना जेते बळे सब बळे जीडीपी बढ़ुची जदि गोटे डेवलपिंग नेशन अछि बा आपणकर विकासशील देश ता दर जीडीपी सब बळे बढ़िबो तेणु प्रत्येक वर्ष आपणकर जीडीपी रे वृद्धि हबा कथा तेणु ऑलवेज आपणकर ये क्वांटिटी एवं ये क्वांटिटी पॉजिटिव आसो कना एटा अधिक सदाळे रहइबो तेणु जेते बळे प्रथम आपणकर 5 ईयर प्लान आस्थिला तार टार्गेट रखाइतला 2% 1 रे हमें ग्रोथ करिया किंतु हमें ग्रोथ करथिले 3.6% जोटा कि बहुत सक्सेसफुल हेतिला 5 सेकेंड 5 ईयर प्लान आपणकर 56 नु 61 हेतिला हला दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान एवं ये 5 ईयर प्लान रे कोन करैला सरकार हां प्रथम 5 ईयर प्लान रे मुख्यतः क्यों सेगमेंट को फोकस कराइतला ना इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट्स को हमरा फोकस करा जाइतिला कारण हमर तो पैसा संचय करे एते खर्च करबानी हो तो हारोल्ड डामर मॉडल एया ही कहउची आ देन आपणकर सेकेंड 5 ईयर प्लान आपणकर कोन करा गला ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करा गला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपणकर करा गला अर्थात सरकार नियुक्ति बढ़ाया पई कि निजे कोन कले ना बहुत सारा खर्च करिकरी विभिन्न प्रकार आपणकर इंडस्ट्री सेटअप कले हला जेमति कि एई पीरियड रे ही आपणकर कोन हेतला ना राउरकेला स्टील प्लांट भलिया प्लांट मानकर प्रपोजल रखा जाइथिला ठीक अछि ना किंतु टार्गेटेड ग्रोथ रे रखा था 7.5 किंतु अचीव करा गला 4.1 किंतु प्रॉब्लम कोन हला ना ये प्लान रे हमें आय तुलना रे व्यय अधिक कर देले से वर्ष ये जो 5 वर्ष भीतर हमें व्यय बहुत एते मात्रा रे कर देलु जे हमर श्रीलंका भलिया परिस्थिति हे जेतला जेमति हमें श्रीलंका जे पैसा सुजी न परछि हमर भी सेही समय रे पैसा सेमति असुविधा हेतिला हला किंतु ये एक गोटे बेस लाइन तैयारी कला जे गोटे मूलदुआ सृष्टि कला जे भारत रे गोटे इंडस्ट्रियल हब हेई पारिबो बेली कला सेतबेले प्रधानमंत्री जे थिले ना से अत्यंत चमत्कार प्रधानमंत्री थिले से नथिले हेई पारे कि भारत आज ए भली स्थिति रे पहुंची पारि न थांदा देन थर्ड 5 ईयर प्लान आपणकर 1961 नु 66 आस्तिला जोटा कि गादगिल योजना रे कहा जाय
जो थे कि भारत को आपणकर कौन करा ना सेल्फ सफिशिएंट करवा सेल्फ सफिशिएंट माने आमे कौन करवा ना कहा पकरे हाथ न पतेइकरी आमे कौन करवा ना आमे निजे निजर खर्च को मेंटेई पारिबा जो थे कि आउ गोटे जिनस रखा गला रीजनल डेवलपमेंट प्रत्येक क्षेत्र भारतर विकास करवा है दैट बिकम तो आपणकर रीजनल डेवलपमेंट सेगमेंट रे आसी थाए ता व्यतीत ये प्लान रे भी 2 वर्ष पर आपणकर कौन है ना ये प्लान गोटे प्रकार आपणकर सक्सेसफुल प्लान नथिला कारण आपण जानचंती कि 61 मसीहा रे आपणकर कौन हेतला ना इंडो चाइना वार हे गला तेणु ये आमे से भली कोनोसी अचीवमेंट करि पारले नाही अचीवमेंट न होबा फल रे हमर इकोनॉमी की कोलैप्स हे गला इंडो चाइना वार द्वारा तेणु आमको कौन करला पैसा अभाव फल रे आमको 3 ईयर एनुअल प्लान आनिया को पड़िला जहा को कहा जाय प्लान हॉलिडे 66 रु 69 ठीक अछि देन आपणकर ए 66 रु 69 भितरे आपणकर 66 रु 67 आपणकर सबुज विप्लव बा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हेतिला ठीक अछि देन फोर्थ 5 ईयर प्लान आपणकर 69 रु 74 जो थरे कि स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव रखा हेतिला बट अगेन इथरे टारगेट रखा हेतिला 5.7 बट अचीव हेत पाला मात्र 3.3 कारण 1971 जदि आपणकर मने थिबो भारत एवं पाकिस्तान भितरे गोटे बहुत बड़ युद्ध हेतिला एवं इथरे बांग्लादेश रो सृष्टि हेतिला तेणु युद्ध होबा फल ग्रोथ तो कमी जीवो तेणु आमे इथरे सक्सेसफुल हेई पारले नाही 6th 5 ईयर प्लान जोटा कि इंपोर्टेंट प्लान मन रखंतु प्रथम थर पाई कि सरकार कोन कले ना पोवर्टी इराडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऊपर फोकस कले जोटा कि गोटे एएसओ रे क्वेश्चन पड़ितिला आई थिंक 2015 मसिया एएसओ रे पड़ितिला जे पोवर्टी इराडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रथम थर पाई केउ 5 ईयर प्लान रे इंट्रोड्यूस हेतिला 2015 एएसओ रे एटा क्वेश्चन थिला तो जदि ये क्वेश्चन थिबो ताले आपनकर आंसर कोन हेतांता 6th 5 ईयर प्लान आपनकर हेतांता क्लियर देन 7th 5 ईयर प्लान आपनकर 1985 रु 1990 पर्यंत गला जोटा ऑब्जेक्टिव थिला कि रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन यार लक्ष्य रहिला ठीक अछि 85 रु 90 मसिया बेलू को आपनकर राजीव गांधी पळे आस्तांती सरकार रे हला एही समय भितरे कोन हला ना औद्योगिक आपनकर कोन हला ना कंप्यूटर क्रांति मोबाइल क्रांति ये सबु जाक आपनकर राजीव गांधी को समय रे ही हेइतिला एवं राजीव गांधी जतरे प्रधानमंत्री हेले सेतबेले फूड ग्रेन प्रोडक्शन को अधिक रु अधिक करबा पई कि लक्ष्य रखिले तेणु 85 रु 90 मसिया रे आपनकर जोटी आम टार्गेटेड ग्रोथ रेट थिला 5% से समय रे आपनकर 6% कोन हला ना ग्रोथ रेट आमे अचीव कर पारथिला तेणु टोटली कहया गले 7th 5 ईयर प्लान गोटे सक्सेसफुल प्लान थिला किंतु राजीव गांधी को सरकार गला परे आपण जानथिबे बोफोर्स कांड हेतिला से समय रे राजीव गांधी को सरकार गला परे आपणकर भारत रे गोटे क्राइसिस देखा गला इकोनॉमिक क्राइसिस भारत पाखरे से समय रे आपणकर भारत रो जे प्रमुख मित्र देश रशिया भांगी जाय थाए एवं आपणकर गल्फ रे बा आपणकर इराक एवं कुवैत रो लड़ाई चलथिला तेणु ये समय रे भारत रो ग्रोथ रेट रे बहुत प्रभाव पड़िला एवं सेथि पई भारत पाखरे पैसा न थिबारु दुईटी एनुअल प्लान्स करिया को पड़िला भारत रो सिचुएशन इमिति हे जेतला जे भारत रो पैसा पई कि निजर सुना बंधा पकेवा को पड़िला ए समय भितरे हला तेणु 2 एनुअल प्लान आपणकर 90 रु 91 91 रु 92 आ गोटे मन रखियो एई भले आपणकर प्लान हेतिला जहा को हमें कहूचे 3 एनुअल प्लान्स आपणकर 66 रु 69 हेतिला एवं 2 एनुअल प्लान्स आपणकर 91 रु 92 पर्यंत जाइथिला 91 रु 91 91 रु 92 देन आपणकर 8 5 ईयर प्लान 92 रु 97 पीवी नरसिम्हा राव थांती एवं पीवी नरसिम्हा रावकर इकोनॉमिक मिनिस्टर थांती बा अर्थ मंत्री थांती मनमोहन सिंह तेणु प्रथम थर पई कि ये गोटे नुआ कांसेप्ट आनिले जहार ना होची एलपीजी गैस नुह एलपीजी रो फुल फॉर्म होची लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यह द्वारा कौन है ना भारत अर्थनीति को अन्य देश पई कि खोली दिया गला ता द्वारा कौन है ना अनेक देशर लोक माने एठारे आसिक निजर फैक्ट्री बसैले एवं फैक्ट्री बसैबा द्वारा कौन है ना एम्प्लॉयमेंट वृद्धि घटिला एजुकेशन पब्लिक हेल्थ ये सबु जिनस जोटा हमर अचीव माने टारगेट रखा हितला हमें ताठू अधिक अचीव कले अर्थात 5.6 हमर टारगेटेड प्लान थिला बट हमें 6.8 तेणु मोटा मोटी कहया गले ये प्लान 8 5 ईयर प्लान
भारतर अर्थनीति को संपूर्ण परिवर्तन करैदेला किंतु कौन सी अर्थनीति स्टेबिलिटी हवा को हेले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी निहाती दरकार किंतु प्रॉब्लम कौन हला ना 97 नु 2002 भितरे हला आपणकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आसिला नाही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी माने कौन ना नरसिंह राव सरकार थिला नरसिंह राव को सरकार पर देवगौड़ा आसिले देवगौड़ा आईजी गुजरात तेणु या भितरे आपणकर सरकार भांगु थाए गढ़ु थाए भांगु थाए तेणु से क्षेत्र रे जो 9th 5 ईयर प्लान आमे 7% ग्रोथ रखिथिले आमे प्रीवियस ग्रोथ को देखिकरी सेटा आमे अचीव करि पाइलेनी मात्र 5.6 आमे ग्रोथ रेट पाई परले बुझा पड़ला ता भितरे आपणकर कारगिल वार भी गोटे मुख्य रोल प्ले करथिला सबुटु मोस्ट इंपोर्टेंट 9th 5 ईयर प्लान आमे 50th ईयर इंडिपेंडेंस आमे सेलिब्रेट करूचे 10th 5 ईयर प्लान रे 2002 रु 2007 एटा आपणकर अटल और मनमोहन सिंह का सरकार थाए अटल और मनमोहन सिंह का सरकार आपणकर कौन कला ना भारतर जो पर कैपिटा इनकम को दुई गुणित करिवार लक्ष्य रखिथिला टार्गेटेड रखाइथिला 8% हला जोटा कि ऑलमोस्ट अचीवेबल थिला एटा गोटे बहुत भलो पीरियड थिला 2002 रु 2007 हला देन आपणकर 11th 5 ईयर प्लान 2007 रु 2012 ऑब्जेक्टिव थिला फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एवं 12th 5 ईयर प्लान 2012 रु 2017 जोथे कि ग्रोथ रेट टारगेट रखाइथिला 9% बट जेतबळे 2012 रे मनमोहन सिंह सरकार ए 5 ईयर प्लान प्रपोज करथिले 2014 बेलको मनमोहन सिंह सरकार पळैला एवं ये आपणकर 2015 मसिया रे नरेंद्र मोदी गोटे नुवा कांसेप्ट नै आसिले नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बा नीति आयोग रो लक्ष्य थिला कोन ना जेते आमे 5 ईयर प्लान्स देखिथिले सेटा से ऊपर बनेउथिला एवं ऊपर माने टॉप रु बॉटम पर्यंत कोन होतला ना प्लान डिस्ट्रीब्यूट होतला किंतु नीति आयोग संपूर्ण रिवर्स अर्थात बॉटम लेवल आपनकर डेवलपमेंट प्लान ता आपनकर सेंटर लेवल पर्यंत बा जीवो तेनु टॉप टू बॉटम जोटी आपनकर प्लान थिला वर्तमान ठीक अछि दैट इज आपनकर नीति आयोग थिला तो नीति आयोग चेयरमैन होचंती वर्तमान आपनकर प्राइम मिनिस्टर एवं इथरे आपनकर मुख्यमंत्री माने आपनकर सदस्य रहिसंती आ फाइनली आपनकर आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा सीईओ आपनकर आईएएस अछंती अमिताभ कांत तेणु मन रखिए बेले बेले क्वेश्चन आपनकर नीति आयोग फुल फॉर्म पचार दिए द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आई होप मते आपनकर मो क्लास आपनको भलो लागि थाई पारे जदि आपनको मो क्लास भलो लागि छि ताहाले लाइक करिवे हम चैनल को सब्सक्राइब भी करिवे थैंक यू सो मच सर थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास आउ आपण माने एई भलिया बहुत किछि क्विजेस आउ टेस्ट सीरीज पाई परिवे हमर ओकेसीएल लर्निंग कंपनी ऐप रे आज ही डाउनलोड करंतु गूगल प्ले स्टोर को जाइकरी सेठी ओकेसीएल लर्निंग कंपनी ऐप रे आपण एएसओ बैंकिंग बीएड कोचिंग पाई परिवे ये जो एएसओ सीरीज थिला ए एएसओ सीरीज रे एक्चुअली सेक्रेटरी एएसओ 2022 रे आमे एक्सक्लूसिव कोचिंग प्रोवाइड करछु ए जो ऑनलाइन माध्यम रे तेनु से आप रे हमरो रिकॉर्डेड वीडियो रहिछि एतद व्यतीत विभिन्न पीडीएफ ई मटेरियल क्विजेस आउ टेस्ट सीरीज मध्ये अछि तेनु तेनु आज ही जॉइन करंतु हमरो ओकेसीएल अचीवर सीरीज रो एएसओ 2022 पैकेज रे थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास विश यू ऑल द बेस्ट इसके